Hello students, today we will be doing class 9th SST Economics chapter 1 important questions. So without further ado, let's begin. Question 1. Every village in India is surveyed once in 10 years during the census, and some of the details are presented in the following format. Fill up the following based on information on point. So, every village in India, every village which is present in India is surveyed once in a decade during the census. The census is essentially a decadely survey which provides us with information on various fields. In this case, it is providing us with information about the village of Palampur. Specifically, the location of Palampur, the total area of the village, the facilities available, and how the land is used in the village. So, some of the details are present in the following format. All the details that are necessary are presented in this format right here that you are currently seeing. So, we need to fill up the following based on the information that we know of about Palampur. So, let's begin. The first part of this question is location. Where is Palampur located? And the correct answer will be Bulansar district, western Uttar Pradesh. This is where Palampur is located. Now, let's move on to the second part of this question. What is the total area of the village? The total area of the village is 226 hectares. Now, it is an important thing that you should know that the total area of a piece of land, not only village but any piece of land, is always calculated in hectares, not in kilometers. Also, another thing to note is that this question is asking us about the total area of the land, not the area of the land which is not available for cultivation, not the area of the land which is properly irrigated, but the total area. I hope you guys can understand. And now the final part, but the third part of this question, land use. How is the land used in the village? So this table right here provides us with the land, with how the land is used. There are two parts, the cultivated land and the land which is not available for cultivation. The cultivated land consists of two groups, irrigated land and unirrigated land. The irrigated land is the piece of land which has proper irrigation facilities, whereas the unirrigated land is the piece of land which lacks such facilities. So, the irrigated land is of 200 hectares, whereas there is no unirrigated land present in the village. This dash represents that there is 0 hectares of unirrigated land in this village. And now moving on to the land that is not available for cultivation. This can be due to various reasons such as the construction of roads, the presence of residential areas, or the presence of ponds in the given area. Due to all of these reasons, a land may be uncultivatable. So the land which is present in the village which is not available for cultivation is of 26 hectares. Once again, note that the correct unit of measurement is 26 is hectares, not kilometers. Now moving on to the fourth and final part of this question, the facilities. What facilities are present in the village of Palampur? First of all, we will discuss about the educational facilities in this village. This village has 3 schools in total, 2 of which being primary schools and only 1 school being a high school. So the educational facilities in Palampur are well developed. Let's move on to the medical facilities. In Palampur, there is 1 primary healthcare center which is run by the government, and there is 1 private dispensary. What about the markets? What markets are either inside Palampur or near the village? And the 2 markets are Raiganj and Sahapur. What about the electricity supply? Most of these houses in Palampur have electric connections, with electricity powering all the irrigation facilities such as electric tube wells and also assisting in the running of small businesses.
such as shops and all the other businesses that are in Palampur. Now, what about communication? The communication is well developed in Palampur due to it being well connected with neighboring villages and towns 3 kilometers from Raigad. All-weather roads connected to Raiganj and further on to Sapur. All-weather roads meaning roads which can withstand different types of weather, whether it be sunny, rainy or winter. It can withstand all conditions. These types of roads are known as all-weather roads. These all-weather roads connected to Raiganj and further on to Sapur. Moreover, many kinds of transport facilities like bullock carts, tongas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors and trucks are present. So, not only the traditional methods of transport like tongas, bullock carts and the likes, but also motor vehicles are present, such as motorcycles and tractors. Thus, the communication and the transportation facilities in Palampur are also well developed. Now, what about the nearest town? Which town is closest to Palampur? And the town which is closest is Sapur. So, that's the first question done. Let's now move on to question 2. Alright. Question 2. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industries. Do you agree? The modern farming methods which make use of various agricultural implements like high yielding varieties of seeds, pesticides, chemical fertilizers and all of that, they require more inputs which are manufactured in industries, meaning that more processes are required in the industries to manufacture the things needed in order to do modern farming methods. Now, do we agree with this statement? Well, let us see. Modern farming methods involve the use of high-yielding variety seeds. These seeds require a combination of chemical fertilizers and pesticides. Modern farming methods involve the use of high-yielding variety seeds. Now, what are high-yielding variety seeds? First of all, let us learn what are traditional varieties of seeds. Traditional varieties of seeds are the seeds which produce a relatively low yield meaning the number of crops produced in 1 year. So, traditional seeds are the ones which produce a relatively low yield of seeds, whereas modern farming methods involve the use of high yielding varieties, meaning they produce more yield, more crops in a particular year. Alright, so these seeds require both a combination of chemical fertilizers as well as pesticides. They also require agricultural implementations like tractors as well as proper irrigation facilities like electric tube wells to produce the best results. Although it is possible to make use of these seeds without आप यूज तो कर सकते हो इन सीड्स का बिना फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशंस यूज किए इन सीड्स के साथ. सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. All of these elements that are used in modern farming methods are manufactured in the industries. Hence, it would be right to say that modern farming methods make use of greater number of industrial outputs as compared to traditional farming methods. इसलिए सही बोलना जाएगा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें ज़्यादा इनपुट्स हैं जो इंडस्ट्रीज में होती हैं in comparison to traditional farming methods. Alright, now let's do question 3. How did the spread of electricity help the farmers in Palampur? The answer to this question will be, the spread of electricity has helped the farmers of Palampur village in the following ways. इन तरीकों से जो स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसने फार्मर्स ऑफ पालमपुर की मदद की थी. Most of the houses have electric connections
Electricity is used to run tube wells in the fields and electricity is used in various types of small businesses. ठीक है, इन सारे रीजन से इलेक्ट्रिसिटी ने हेल्प करी थी फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने के लिए. क्वेश्चन 4. Is it important to increase the area under irrigation? Why? Answer. India is an agricultural country. Nearly 2/3 of the people are dependent on farming for their livelihood, but the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. जैसे आप जानते होंगे, इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और जो 2/3 है इंडिया की पॉपुलेशन की वो डिपेंड करते हैं वो एग्रीकल्चर में अपने लाइवलीहुड के लिए, वो जीने के लिए. एग्रीकल्चर जो है वो उनकी जॉब है एक तरीके से. However, most of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. Of the total area that is cultivated in the country, 40% से भी कम एरिया है जो इरिगेट किया जाता है. इरिगेट मतलब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होती है उन एरिया में. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall, which is irregular and uncertain. जो remaining areas हैं, जो 60% एरियाज बचे हुए हैं, उनमें फार्मिंग लार्जली डिपेंड करती है रेनफॉल में, जो इरेगुलर भी है और अनसर्टेन भी है. मतलब हम जान नहीं सकते कि रेनफॉल कब आएगा, कौन से टाइम में आएगा, और साथ में वो इरेगुलर भी है, मतलब बार बार नहीं आता. So, modern farming methods cannot be used in the absence of assured adequate water supplies. India cannot achieve the goal of self-sufficiency in food grains unless the area under irrigation is increased. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो हम कर नहीं सकते हैं जब तक हमारे पास एडिक्वेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होगा. इसकी वजह से इंडिया अचीव नहीं कर सकता सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन फूड ग्रेन्स अनलेस द एरिया अंडर इरिगेशन इज इंक्रीज्ड. अनलेस जो इरिगेशन है, इरिगेशन फैसिलिटीज वो ज्यादा स्प्रेड की जाए. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. Construct a table on the distribution of land among the 450 families of Palampur. We need to create a table on how the land among the 450 families of Palampur is distributed. Here is the table. The number of families which have exactly 0 hectares of land are 150. The number of families जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है वो है 240. एंड बची हुई जो फैमिलीज हैं उनके पास लैंड है विच इज मोर देन 2 हेक्टेयर्स 60. ऑलराइट, आपको ऐसे ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 6. Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? Answer. Farm workers at Palampur get lower wages than the minimum wages fixed by the government. The minimum wages for farm laborer is fixed at rupees 115 per day. जो वर्कर्स हैं, जो फार्म में लेबरर्स हैं, उनको पालमपुर के अंदर लोअर वेजेस मिलती है एज कंपेयर टू जो मिनिमम वेजेस है जिन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई थी. जो मिनिमम वेज है एक फार्म लेबर के लिए वो फिक्स्ड है, मतलब उसमें बदलाव नहीं है, वो फिक्स्ड हो रखी है at 115 per day. But despite that, the farm laborers only get rupees 70 to 80. This happens because of high competition to work among the farm laborers at Palampur. जो पालमपुर की विलेज में है उसमें बहुत हाई कंपटीशन है फार्म लेबरर्स के बीच में. इसकी वजह से जो फार्म लेबरर्स हैं वो ऑफ्टन एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑफ्टन एक्सेप्ट टू वर्क एट लोअर वेजेस ताकि वो कंपटीशन को मैच कर सके, ताकि उनके लाइवलीहुड ऑफ बीइंग पेड टू डू द जॉब ऑफ अ फार्म लेबरर इज इंक्रीज्ड. लेट्स डू क्वेश्चन 8 नाउ. What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं ऑन दी सेम पीस ऑफ लैंड. हमें नॉट ओनली बताना है कैसे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स भी देना है.
The different ways of increasing production on the same piece of land are multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. Under it, more than one crop is grown on the same piece of land during the year. A way to increase production on the same piece of land is multiple cropping, जो है most common way of increasing production on a given piece of land. मल्टीपल क्रॉपिंग में मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा प्लांट ग्रो किया जाता है एक ही पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में. इंडियन फार्मर्स शुड ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स इन अ ईयर. इन इंडिया सम फार्मर्स आर ग्रोइंग अ थर्ड क्रॉप आल्सो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. एग्जाम्पल क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग का? जो विलेज ऑफ पालमपुर में, उसमें ज्यादातर फार्मर्स जो है वो जोवर एंड बाजरा को ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, और फिर बाद में फॉलो करते हैं उसको पोटैटोज के साथ. ये इनकी थर्ड क्रॉप है, पोटैटोज को ड्यूरिंग द मंथ्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. एंड फिर बाद में वो विंटर सीजन में वीट को ग्रो करते हैं. तो यह है एग्जाम्पल मल्टीपल क्रॉपिंग का. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. Production on the same piece of land can also be increased by adopting modern farming methods. The green revolution in India is a remarkable example of it. Production हम ज्यादा कर सकते हैं एक पीस ऑफ लैंड में जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करेंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडिया में वो हमें दिखाता है इसके बारे में. Under modern farming, more cultivatable areas should be brought under HYP seeds. HYP stands for high yielding variety seeds and irrigation. This use of simple wooden plow must be replaced by tractors. The increasing use of farm machinery like tractors, threshers, harvesters, etc. make cultivation faster. हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की हेल्प से कल्टिवेटेबल एरियाज को जो उनकी यील्ड है हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम HYV सीड्स को यूटिलाइज करेंगे और इरिगेशन को भी यूज करेंगे. उसके साथ साथ हमें सिंपल वुडन प्लो जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए ट्रैक्टर्स के साथ. Moreover, the increasing use of farm machinery like tractors, threshers, etc. make cultivation faster. इन मशीन को यूज करने से जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी होगा. And these are the different ways we can increase production on the same piece of land. Moving on to question 9. Oh, hello random account और hello SpongeBob. हाँ, अगर आपके पास कोई और डाउट्स होंगे तो मेरे से पूछना, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा. एनीवेज, अब हम मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन 9. Describe the work of a farmer with 1 hectare of land. जो एक फार्मर है जिसके पास 1 hectare of land है उसका वर्क कैसे करता है हमें डिस्क्राइब करना है. इसका आंसर होगा a farmer with 1 hectare of land shall be put under the category of small farmer. जो फार्मर है जिसके पास 1 hectare of land है ओनली उसको स्मॉल फार्मर माना जाता है. Most of the work would be done by the farmer and his family members. The farmer will normally use a pair of bullocks to plow the field in comparison to a tractor. जो bigger farmers हैं वो normally use करेंगे tractors को. However, since the small farmer is under a budget constraint, he will instead make use of bullocks to plow the field. His family members would assist him in sowing the seeds. During harvest time, he may require to hire some laborers. जो उसके फैमिली मेंबर्स है वो उसकी मदद करेंगे इन सोइंग द सीड्स. मोरओवर, जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा तब उसको हायर भी करना होगा कुछ लेबरर्स को अपने काम को करने के लिए. तो यह है वर्क एक फार्मर का जिसके पास है 1 hectare ऑफ लैंड. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 10. हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो obtain कैसे करते हैं, वो कैपिटल को कैसे जोड़ते हैं फार्मिंग करने के लिए, और वो क्या चीज करते हैं, क्या डिफरेंट चीज करते हैं स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन में. इसका आंसर है ये. Medium and large farmers usually have surplus cash by selling their farm produce.
Since they have land and house, they can easily get loan from banks. जो मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस कैश होता है, मतलब एक्स्ट्रा कैश होता है, क्योंकि वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उसके साथ साथ उनके पास लैंड और हाउस भी होता है, जिसकी वजह से उनको आसानी से लोन मिल जाता है बैंक्स में। ऑन द अदर हैंड, स्मॉल फार्मर्स may not be able to get bank loans. They have to depend on the local merchant and money lender for loan. These small farmers are unable to get loans from the bank. Instead, they have to be dependent on the local merchants and money lender for loan, which is unfortunate considering the fact जो local merchants होते हैं और money lenders होते हैं वो overcharge करते हैं, वो interest को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं जब वो लोकल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर से लोन लेते हैं, जबकि जो बैंक्स देते हैं लोन वो कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट में होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11. On what terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? ऐसी कौन सी टर्म्स थी जो सविता को एक्सेप्ट करनी थी, जिनकी वजह से वो तेजपाल सिंह से लोन ले सकती थी? And would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a lower rate of interest? Savita required money for buying seeds, fertilizers and pesticides and water for irrigation. जो सविता थी उसको मनी की जरूरत थी अगर उसको सीड्स बाय करनी थी, फर्टिलाइजर्स को बाय करना था, पेस्टिसाइड्स को बाय करना था, एंड आल्सो फॉर वाटर टू इरिगेट हर फील्ड्स. शी आल्सो नीडेड मनी फॉर रिपेयरिंग हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स. सो शी डिसाइडेड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर इन हर विलेज. इसको मनी की जरूरत थी सविता को, सो उसने डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह से एक लोन लेगी. जो तेजपाल सिंह था वो एक लार्ज फार्मर था विलेज के अंदर. सो तेजपाल सिंह agreed to give the loan of ₹3,000 at an interest rate of 24% of 4 months. तेजपाल सिंह अग्री करता था, वो तेजपाल सिंह वो लोन दे देगा ₹300 में at an interest rate of 24% for 4 months. He also got her to agree to work on his field during the harvest season for 35 days. लोन देने के साथ साथ उसने भी उसको फंसा दिया था, उसको एग्री करवा दिया था कि वो उसकी फील्ड में काम करेगी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन फॉर अ वेज ऑफ ₹35 per day. Savita's condition would have been better if she could get a loan from the bank. The bank would have provided her a loan at a lower rate of interest. Moreover, Savita could have devoted more time on her own field instead of working for Tejpal Singh as a farm labor. जो सविता का कंडीशन थी वो और भी अच्छी होती अगर वो लोन लेती एक बैंक के साथ. जो बैंक होता वो not only provide करता एक लोन at a lower interest, but she could also devote more time on her own field instead of working for Tejpal Singh as a farm laborer. She could pay attention to her own fields only, without having to work as a farm laborer for Tejpal Singh in the process. Okay, now let's solve question 14. What can be done so that more non-farm production activities can be started in villages? The answer to this question is 3 things that need to be done to encourage non-farm production activities in villages. First of all, the government should set up schemes where landless laborers and small farmers are able to get cheap loans to start small individual/community businesses. जो गवर्नमेंट है उसको सेटअप करनी चाहिए वेरी स्कीम्स जिसकी वजह से जो लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल फार्मर्स हैं वो चीप लोन्स ले सकते हैं एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट small individual/community businesses. In addition to financial assistance, the government should also set up rural workshops to enable the villagers to build up their own skills.
And the final point, the government should also work towards improving the infrastructure of villages so that the rural parts of the country are well connected to the urban areas. जो गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस, तो जो रूरल एरियाज है कंट्री के वो अर्बन एरियाज के साथ सिटीज के साथ वेल कनेक्टेड रहे. ओके, नाउ these were all the NCERT questions, but we shall also do some important extra questions in order to get a firm grasp on the concepts of this chapter. Now let's do these questions as well. Question 1. What are the main activities of the people of village of Palampur? क्या एक्टिविटीज है, क्या मेन एक्टिविटीज है जो पीपल ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर करते हैं? करेक्ट आंसर होएगा इसका फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की विलेज की, लेकिन उसके साथ साथ जो वेरियस अदर एक्टिविटीज है जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी भी कैरी आउट करती है लेकिन एक लिमिटेड स्केल के साथ. मतलब ये फार्मिंग की तरह ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है. क्वेश्चन 2. व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज आर नीडेड बाय दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज? ऐसे कौन सी सोर्सेज हैं जो इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए चाहिए हमें? इसका आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी एटसेट्रा आर द सोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज. Question 3. What kind of transportation is used for connecting Palampur to these neighboring villages and towns? ये है various types of transport, bullock carts, tongas, wooden carts, motorcycles, jeeps, tractors and trucks है. ये सारे टाइप की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है जो पालमपुर विलेज में अवेलेबल है. Question 4. How many families live in Palampur? About 450 families belonging to several different castes live in Palampur. About 450 families जो है वो पालमपुर में रहती है और many जो है वो different castes में belong करती है. कुछ ब्राह्मण होएंगे, कुछ अलग, कुछ lower caste के होएंगे. ये ठीक है. Moving on to question 5. What was the benefit of electricity in Palampur? जो पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड हुआ था उसने पालमपुर के विलेजर्स को, नॉट ओनली फार्मर्स बट द विलेजर्स इन जनरल, उनको कैसे बेनिफिट किया था? Most of the houses have electric connections. Electricity powers all the tubewells in the fields and is also used in various types of small businesses. जो हाउसेस है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस उनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है. उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स और उसको स्मॉल बिजनेस में भी यूटिलाइज किया जाता है. Question 6. What is the first and foremost requirement for the production of goods and services? जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन एक्टिविटीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या है? इसका आंसर है द foremost requirement is land and other natural resources such as water, forests, minerals etc. यह है यह फर्स्ट एंड foremost requirement of production of goods and services. Question 7. What is called working capital? Working capital क्या है? Production requires a variety of raw materials and some money during production to make payments and buy other necessary items. These are included in the working capital. जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो रिक्वायर करता है वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ऑल्सो सम मनी इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट्स एंड ऑल्सो बाय अदर नेसेसरी आइटम. जो ये आइटम्स होते हैं इनको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल वो आइटम्स होते हैं जो यूज अप किए जाते हैं प्रोडक्शन में, जबकि जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स हैं मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एटसेट्रा. ये जब वंस परचेस्ड कैन बी यूज्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स ऑन एंड, जबकि जो वर्किंग कैपिटल है वो यूज किया जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज. क्वेश्चन 9. what are the four main factors of production? इसका आंसर होगा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल.
ये 4 फैक्टर्स हैं फॉर प्रोडक्शन। Question 10. What was the main reason behind the growth of 3 different crops in a year in Palampur? क्या रीजन था behind the growth of 3 different crops in a year in Palampur? इसका आंसर होएगा the main reason was the well developed system of irrigation. जो पालमपुर की विलेज थी उसमें अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम था इरिगेशन का। इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होते थे फील्ड्स में, उसके साथ साथ 200 हेक्टेयर्स जो ऑल दी कल्टिवेटेड लैंड था पालमपुर की विलेज में, वो सारा का सारा इरिगेटेड था। इसकी वजह से जो पालमपुर का इरिगेशन वाला सीन था वो वेल डेवलप्ड था। इसकी वजह से ये रीजन है बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। क्वेश्चन 11. व्हाट डज मल्टीपल क्रॉपिंग मीन? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। द एक्ट ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड एक साल में, इसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन 12. What is the benefit of multiple cropping? फायदा क्या है multiple cropping का? It is the most common way of increasing production on a given piece of land. यह है benefit of multiple cropping. Question 13. How did green revolution benefit the Indian farmer? Green revolution ने Indian farmer को कैसे benefit किया था? मैथ का इम्पोर्टेंट लाइव नहीं है क्या? यस किसान, ये मैथ का इम्पोर्टेंट लाइव नहीं है। And random account, hello master ji, hello random account. Okay, once again question 13. ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन फार्मर को बेनिफिट कैसे किया था? The green revolution in late 1960s introduced the Indian farmer to high yielding variety of seeds to produce much greater amount of grain on a single plant. जो ग्रीन रेवोल्यूशन था 1960s में, उसने इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस किया था हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स में, जिनकी वजह से एक ग्रेटर यील्ड, एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते थे ऑन अ सिंगल प्लांट। दिस इज हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द इंडियन फार्मर। Moving on to question 14. How was land resource affected by modern farming methods? Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंड की प्रिजर्वेशन करना। However, scientific reports ये कहती हैं जो मॉडर्न फार्म मेथड्स है वो ओवर यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स बेस को, लैंड रिसोर्सेज को। इसकी वजह से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होती है और लैंड पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। क्वेश्चन 15. हाउ डू फार्मर लेबरर्स गेट वेजेस इन पालमपुर? जो पालमपुर में फार्म लेबरर्स हैं उनको वेजेस कैसे मिलती है? इसका आंसर है वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्रॉप, जैसे कि फूड ग्रेन्स। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। जो वेज है जो फार्म लेबरर्स को मिलती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्रॉप वो कल्टीवेट कर रहे हैं और कौन सी फार्म एक्टिविटी वो कर रहे हैं। अगर वो थ्रेसिंग कर रहे होंगे तो उनकी वेज वेरी करेगी, और अगर वो सोइंग कर रहे हैं सीड्स की, अगर वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तभी भी उनकी वेजेस वेरी करेगी, मतलब कोई भी फिक्स्ड वेज नहीं है। Now let's go on and solve question 16. How small farmers manage the capital needed for farming? जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको कैपिटल कैसे मिलता है फार्मिंग की जरूरत के लिए? जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बारो करते हैं मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। वो अलग अलग तरीके से बारो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन वे ऑफ बारोइंग मनी इज थ्रू मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। इनसे ये मनी को बारो करते हैं, लोन में लेते हैं। एंड नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 17, the final question for today's video. What is the basic difference between two factors of production?
लैंड एंड कैपिटल, उन दोनों के बीच में जो टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड और कैपिटल, उन दोनों के बीच में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स वेयर मनी इज मैन मेड, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर लैंड इज फिक्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, जबकि जो कैपिटल है, वेदर इट बी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये दोनों जो है ये एक ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्स है, जबकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। मोर ओवर, जो कैपिटल है इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द कैपिटल। ऑन दी अदर हैंड, जो लैंड है वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है, मतलब हम जितनी भी कोशिश करें हम लैंड को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल। Anyway students, that is it for today's video. I hope you all enjoyed, and make sure to like and subscribe if you enjoyed the video and learned something new. Bye bye.